Hello everyone, this is me Payal Brishpuria. Hi guys, I am really so. Hello everyone, this is me Payal Brishpuria. Guys, welcome to my YouTube video. Everyone, this is me Payal Brishpuria. Guys, welcome to my YouTube channel, and I'm very excited to watch this video. This is my first YouTube video, and I'm very excited. So, hi guys, see you next. One eternity later. Everyone, this is me Payal Brishpuria. I welcome you guys to my YouTube channel. This is my first video and I really want you to support me. So please support me guys. And अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी और बोलना भी नहीं होगा ऐसे. सो बस यही कहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी. एंड हम आज के वीडियो पे चलते हैं. आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ DIY करते हैं. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वीडियो. So guys, what all you need is acrylic colors, brushes and 2 permanent marker. And now the most important thing, a pot. सो गाइस, मैंने इस पॉट को पहले ही कलर कर चुका है, जैसे कि हम जो कलर करें वो कलर को एब्जॉर्ब ना करे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम परमानेंट मार्कर, ब्लैक परमानेंट मार्कर लेके हम इसमें ड्रॉ करेंगे. आप आपके कोई भी ड्राइंग इसमें ड्रॉ कर सकते हो. मैंने पॉप आर्ट बनाने का डिसाइड किया, तो आई विल ड्रॉ दैट. So guys, I will finish this fast. So this is how it looks like. Now we will start coloring this pot. First, I will start with red color. I will color the bank with red. Now after that, I will color the background side with yellow.
अब हम ब्लू कलर करेंगे and guys, after completing this I will show you the final result. For second pot you need white color, red color and permanent marker, brushes and the paper cutout of flamingo shape. And next we need a pot. First I will color this pot with a white color. After coloring the pot with white color, I will stick the paper cutout with a tape. Then I will mix red color and white color and make this pinkish color. And then I will color this paper cutout with pink. Then we will remove this paper cutout. With pink color we will give this flamingo a perfect shape. Then we will take the black marker and make the legs. Now same we will do here by sticking the paper cutout and coloring it. After making these flamingos all around the pot, I will show you that how it looks like. Once again, hi guys. तो आपको कैसा लगा वीडियो? So please guys, please note down that you have to like my videos, you have to subscribe my videos, and you also have to comment down and tell me that आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. So please guys, कितने बार guys बोल चुका मैंने. So please आप सब मेरा वीडियो
को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ नए आइडियाज़ हैं जो आप देना चाहें तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैं न्यू अपडेट्स दूँगी आपको, सो प्लीज़ इसको फॉलो करिए। और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर बट आई एम अ लर्नर, आई एम अ बिगनर। तो मैं सीख रही हूँ और मैं अपने जितने भी डिज़ाइंस होते हैं उनको पोस्ट करती हूँ अपने घर पे, इस पे नहीं, हाँ इस पे। ये मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में भी अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रीट आर्ट्स भी बनाऊँगी, तो आप उसे भी लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप और क्या न्यू डिज़ाइन से जो देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी करूँगी। और तो bye guys, see you in the next video. Ta-ta.